Sir, it's ringing. Hello? Hello? Is this Lakshmi Hospital? Yes, sir. Can I talk to Dr. Utkarsh? Yes, sir. Sir, MLA is on the call and we want to talk to you. Okay. Hello. Hello doctor. How are you? Fine, sir. What about you? I am also fine. What's going on in hospital? Nothing, sir. Oh, just shut up. I know everything. If you want to settle the matter, then talk to my PA. Sir, until we call. I think you want to close the matter, huh? Yes, sir. But sir, what will I have to do for closing the matter? Give 5 crore rupees as party fund if you want to close the matter. You can consult to your doctor also. Okay, sir. I'll talk to my doctor. Sir, MLA's PA demanding for 5 crore rupees to close the matter. What should we do? I think we should give it. Okay, sir. Hey, just stop. Who are you? I am Utsav Singh from Lakshmi Hospital. It's okay. Let me check you. Okay, you can wait. Come. Sir, a person who is coming from Lakshmi Hospital. Send him. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. I am from Lakshmi Hospital. Oh. Dr. Utkarsh sent me. Okay, sit. Thank you, sir. Would you like to some tea or coffee? No, thank you, sir. Sir, he sent some gift for you. Okay, give me. Thank you. How is your doctor? He is fine. Okay. As we have seen that after has taken a leave from the doctor and settled down whole matter of the scandal in Lakshmi Hospital. And now I am putting a Hindi quote on it. भ्रष्टाचार की जड़ें हैं गहरी, राजनेता ने भ्रष्टाचार की पहली। After some time, MLA PA pictured with him and broadcast the video of whole deal between doctor and MLA. And the people are watching the video. Start scene 7. Shahid, see what happened in Lakshmi Hospital. There is a kidney racket. Yes, they are smuggling the kidney, and the office is also the victim. We have to protest against this action. Yes. We want Justice. justice for Police. We want Justice. justice for Police. Arrest the Doctor. Arrest the MLA. We want Justice. We want Justice. Arrest the Arrest the MLA. Good afternoon, everyone. Welcome to all of you in our Yashan News channel. This is your host, Kev. As you can see, people are protesting here, but we don't know why they are protesting. Let's go there. What happened, sir? Why are you protesting? Please tell me. We are here for the protesting. I will tell you the reason. The people come here for the treatment who have the normal stomach pain, but the doctors are taking out the kidney from the stomach and they smuggling the kidney into the other country. They should do the treatment, but they are smuggling the kidney. So we are here for the protesting. We want Justice. We want Justice. Justice for Please, sir, can you tell me why are you protesting here? We are protesting here because our brother Mufiz Mufiz kidney has been lost because doctor has stolen the kidney from her stomach due to the minor operation. So we are protesting here. Justice for all. We want justice for all. Arrest the MLA is also the part of this corruption. We want Justice. We are protesting here because the all doctors and leader has corrupted and stolen the kidney from the stomach of a patient. So we are protesting here. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Now we want justice for Mufiz. We want Justice. We want Justice. As you guys
people are protesting here because the kidney of the patient has been smuggled by the doctor and MLA. So they are protesting here. They want justice for the patient. Now I would like to my team to perform a dance. Please maintain silence. I would like to invite my team to perform a dance. Give a big hand for them.
sir, can you tell me why are you taking back from the doctor? Silence everyone, I answer all the questions of yours. I am very guilty. I am very guilty for my mistake and I am also guilty for Mufi's death. So I am feel sorry and I am surrendering myself to the police. I am very sorry. Please sir, tell something. I am feeling guilty too and I am surrendering myself. I am very feeling guilty. What should I have done? So I am surrendering myself. What will you do, sir? Yes, I am going to take action against them. Officer, come here. Arrest them. As you can see, the land of corruption was crime. So the police has been arrested here. The alien collected along with the doctor. As we have seen this in this act, how the patient stuck in the trap of doctors and lost their life. Just like this, thousands of people lost their life daily. So we have to challenge the corruption and fight against corruption to make our nation better. In this term, I would like to invite my friend Yash and Prashant to continue the program. Thanks. So friends, as we know that health service is also one of the most corrupt services in India. So Prashant, corruption shifts public spending away from essential public programs. Corruption with countries with higher level of corruptions and regardless of economic developments and tend to spend on less health. So if we talk about the COVID-19, then COVID-19 is just not an economic crisis or health crisis, but it is also a corruption crisis as well, because countless of lives lost due to the insidious effect of corruption. Yes. And corruption also undermined the fear and global response for fighting against the COVID-19. Yes. COVID-19 response exposed weakness of oversight and regardless of tend to be the less on health. And I think that they are the worst perpetrators to spend less on corruption. And, Yes. and the rule of law also breaches while managing the COVID-19 crisis. Corruption is one of the key to achieving the national united substitutional development. Yeah. So I would like to call Vikas to continue the presentation. He gave the poetry. So give a big hand for them. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कहा जाता है यदि इस धरती पर कोई दूसरा भगवान है या किसी दूसरे भगवान का रूप जो होता है वो डॉक्टर होता है, लेकिन आप लोगों ने हमारे एक्ट में देखा कि कैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में करप्शंस करते हैं और उसके सारे जो भी थिंग्स हैं इसमें हम इस पोएट्री के माध्यम से आपको बताएंगे। शहर के एक किनारे पर एक अस्पताल है, सुना है कि वहां धरती के भगवान रहते हैं। शहर के एक किनारे पर एक अस्पताल है, सुना है कि वहां धरती के भगवान रहते हैं। बीमार लाचार बेबस तो होते तन मन से, सुना है उसका वे मिलकर उपचार करते हैं। लेकिन किसे पता क्या क्या खेल होता है, उपचार के साथ व्यवसाय का मेल होता है। बीत जाती है जिंदगियां लोगों की वहां पर, लुट जाती हैं सारी जमा पूंजियां वहां पर। इलाज के नाम पर दवाइयों का बोझ होता है, सौदा जिंदगी मौत का वहां हर रोज होता है। पड़ोस में एक और अस्पताल है सरकारी, जिसे शायद जकड़ चुकी है कोई बीमारी। उपचार के नाम पर है बस कागजी घोड़ा, मरीज की जिंदगी भगवान भरोसे छोड़ा। एक मामूली सी पेट दर्द को गंभीर बना दिया करते हैं, ऑपरेशन के बहाने किडनी निकाल लिया करते हैं। माथे पर जिनके गरीबी का बोझ होता है, सौदा जिंदगी मौत का वहां हर रोज होता है। संयोग से देखकर एक दुखदायी घटना को शायद ही शर्म थोड़ी आई हो
की सत्ता को। मरीज तड़पता रहा लेकिन उपचार न मिला, मशीनें जंग खा रही थी महज जांच न मिला। दौड़ा दौड़ा भागा वह निजी अस्पताल में, लाखों खर्च हो गए जहां उसे महज जांच में। उपचार में लुट गई धन दौलत शोहरत सब वहां, परिवार सड़कों पर आ चुका उसका वहां। स्थल है वही जहां पैसों का बोझ होता है, सौदा जिंदगी मौत का वहां हर रोज होता है। अस्पताल के साथ भी नेता भी जुड़े हुए हैं, अस्पताल के साथ भी नेता भी जुड़े हुए हैं, गरीब जनता का शोषण भी किए हुए हैं। व्यवसाय धन से होती वेदना का काम नहीं, व्यवसाय धन से होती वेदना का काम नहीं, पैसों के आगे संवेदना का कोई स्थान नहीं। वहाँ लाश पर किसी का तो मौज होता है, वहाँ लाश पर किसी का तो मौज होता है, सौदा जिंदगी मौत का वहाँ हर रोज होता है, वहाँ हर रोज होता है। थैंक यू। So what a wonderful poetry given by the Vikas. So कहो यस सुने ना तुमने घर में बिजली वाला मीटर लगे जा रहा हमने जो कागज मांगे वो भी दे दिए थे। पैसा जमा किया था पैसा क्या 150 रुपया मांगा था वो दिए थे। अरे देखो 150 रुपया और क्या ज्यादा दे दोगे क्या ज्यादा नाम कर दोगे 150 रुपये को अच्छा नहीं मिला था। अच्छा हमको नहीं पता था, हमको तो लगा सरकारी काम में फ्री में होगा 150 में होगा। ये भैया यार ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। ये सबसे ये गली से लेकर वो गली तक, ये शहर से लेकर उस गली तक, उस शहर तक, हर जगह से थोड़ा यूं फैला यूं करप्शन। सही बात, ये बात मैंने तुम बहुत सही कही। क्यों आप लोग मानते हो कि नहीं? तो 150 रुपये से नहीं भैया 1500 रुपये से काम बनी। चलो देखा है और ना जमा किया ना तो ऐसे पूरी जिंदगी अंधेरा में काट दियो। अरे ऐसा ना बोलो भैया, अंधेरा क्या काटे, पैसा जमा करेंगे, जेब गरम करेंगे किसी की। तो ये करो जब उनकी जेब गरवानी ना तब है तुम्हारे घर में लाइट ही। चलो तुमने बताया है करेंगे, देखो गरम किसी की जेब। फिर करो जेब गरम, लो ऐसी मजा। और friends, now I would like to call my friend Vijay and he will present here a wonderful thoughts about the corruption. let's give a big hand for them. A lovely good afternoon to all of you, all level chairman sir, respected vice chairman sir, HOD sir, and London faculties, and all my dear friends. Myself Vijay Kumar, and now I will tell you about the corruption. Corruption is a contagious disease that may not only affect the human, but also affect the entire nation. Its movement is so fast that nothing will left until at the last. According to Srimad Bhagavad Gita, the sense, the mind, and the intelligence is the sitting place of lust. The entire lust covers the new knowledge called entity of living. So, over the past decades, there are few approaches that are adopted by the central government to overcome the corruption. Finance institutes and the corruptions and central governments are constantly looking for the new approaches to fight against the corruption. Now friends, I am going to present them some beautiful lines to those childs which are deprived from the government schemes that by the because of the some corrupt politics and the officials. So listen carefully. लाखों का धन है इकट्ठा, लाखों का धन है फिर जाने क्यों भूखे बैठे हैं।
लाखों का धन है क्यों आज भिखारी बन बैठे हैं। काले धन की पूजा कर जाने कैसे तन बैठे हैं। अरे सुनिएगा, लाखों का धन है फिर भी भिखारी बन बैठे हैं। काले धन की पूजा कर जाने कैसे तन बैठे हैं। भूल गए बचपन में खिलौने देकर तुम भी रोया करते थे। भूल गए बचपन में खिलौने देकर तुम भी रोया करते थे। आज कैसे नन्हे बालकों से इनका हक छीन बैठे हैं। थैंक यू। What a wonderful eyes given by the Vijay and तो अरे भैया हमने सुना था तुम बहुत अच्छी शेरो शायरी कर लेते हो। कुछ हमारी जनता को भी सुनाओ भाई। हाँ भाई, 2 लाइन हो जाए। जरा गौर फरमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ तहजीब दिखते हैं, यहाँ फरमान दिखते हैं। क्या बात, क्या बात। कि यहाँ तहजीब दिखती है, यहाँ फरमान दिखते हैं। अरे आप दाम तो लगाओ, अजी यहाँ ईमान बिकते हैं। बहुत दिनों से एक बात थी हमारे जहन में, बहुत दिनों से एक बात थी हमारे जहन में, न जाने कफन में क्यों जेब नहीं होती। न जाने कफन में क्यों जेब नहीं होती, मगर आज पता चला मौत कभी रिश्वत नहीं लेती।